Very warm welcome to YogiRam podcast. Today we are thrilled to welcome BP Agarwal ji to our podcast with a distinguished academic background, having completed his MCom in 1984 from Motivational College. He embarks on a remarkable journey that saw him take the reins as director of a successful manufacturing company for an impressive 25 years. However, his true calling lies in his unwavering commitment to education and mentorship, where he has made a significant impact on countless lives. As a visiting faculty member at Jain Public School in Raipur, BP Agarwal ji not only shares his intensive knowledge but also inspires students with invaluable life lessons. His passion for nurturing ambition and guiding young minds has made him a celebrated educator, motivator, and career counselor, igniting the flames of potential in hearts of future leaders. Join us as we dwell into his experience and insights that continue to shape the lives of many. Very warm welcome, sir. आपका योगीराम पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है. Thank you. So starting with the first question, please share your journey from completing your MCom to becoming a director in a manufacturing company. See, after passing my MCom from Ravenshaw College, Cuttack in 1984, I traveled to Raipur to settle with my brother who ran a company of manufacturing railway concrete sleepers. And I was made a director looking after the commercial and legal matters there. And for a long period of 25 years, I was associated with that company as a whole-time director. And after that, there was some disturbance due to some dispute with the railways. Then I resigned from that company, and then I started my own business. Great, sir. Great. Sir, moving to the next question, what inspired you to transition from the manufacturing sector to education and mentorship? Actually, after completing 25 years of working in that company, there was COVID-19 was epidemic which rose at that time. I suffered a heart attack in my journey to Rameshwaram at that time, and I had two implants in my artery. So I thought of just not to involve myself in any business and take tensions of daily life. So I was inspired to teach, learn and teach. So in those days, in those COVID-19 days, I was in my house for a period of 3 years, and I suffered in hospital also for 1 week. And I brought many books of science and biology, physics and chemistry, and I started writing notes. Although I was from a commerce background, because in my thought, commerce was my majburi, but science was my passion. Great, 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 sir. Sir, moving to the next question, how do you believe your experience in business have influenced your teaching style? See, 25 years of involving in a manufacturing concern is not a small period. Right. I was exposed to many things like purchase, sale, operations, store management, purchase management, quality management, accounts, legal issues. So I was exposed to various aspects of business, and which helped me to teach commerce, accounts, business studies, and economics in my academic sphere. Right, right. That Sir, experience had made me a lot to teach students about the practical aspects of things. right. Sir, moving to the next important question, please share the importance of mentorship in a student's life. It is not enough to become a teacher. You have to guide the student mentally, socially, and emotionally so that he reaches his destination. Teaching is only one part of mentorship. Mentorship is a very broad concept. Supposing just few days back, I was teaching in class 8. I saw one girl staring at me every time, and whatever I write in board, she was noting it down, although other students were not doing so. I found her to be very attentive. Then inquisitiveness rose in my mind not to ask her personally what she wants to become, because I see her very serious in class. So I had that opportunity, and she came to my room. I asked her. Surprisingly,
class 8 student, she told me that I want to become a cardiologist. Great. See, anybody telling I want to become a doctor, that is a very broad concept. Looking Hmm. to this girl of class 8 and she is pinpointing to a focus on cardiology Right. is a very great thing. So I told her that you please be in touch with me and I will help you to traverse this journey towards being a cardiologist. Then I told her that I'll give you a dictionary of biology. You start writing the words and meanings so that it will be very easy for you. This is mentoring. Very good, very good. This is mentoring. Sir, moving again to the Jain Public School and student, what key lessons do you aim to impart to your students at Jain Public School? The management of Jain Public School was very close to me at that time. So I thought of because I have developed certain class seminars on science ko saral karo. I have a kit of my own, and there I in that kit I put household articles like vinegar, lemon, tomato, water, milk, curd, all these things are a part of my kit. And I have a natural indicator which indicates the quality of the substance, whether it is a acid or a base or a neutral. So with that kit, I take 1 hour session of all the students to teach them the basics of science which are available in our home itself, because acid is available in our home as a vinegar, base is available in our home as detergents, and neutrals, water, our water is neutral, the most common thing which we drink every day. So in that way I encourage the students to study science in their home itself. I advise them to read labels of products which you buy at home, because if you read the labels, you can know the ingredients, and that is chemistry. Your kitchen cooking is a chemistry, and physics is all around us. The fan moving is physics, the water coming from the tap is physics. So in that way I take classes, science seminars in schools, and Jain Public School encouraged me to become their part-time faculty, and they told me that you can come anytime and encourage the students and increase their knowledge about science and other subjects. Great, great, great. Sir, moving to the next question and the connected one, how do you ignite the ambition and passion in young hearts as an educator? While I take in the class my subject, nowadays I'm teaching English language and literature. I move around the class and see what the boy or girl, how is she writing, and in what way she is focusing on my teaching. And I usually ask them, how many of you will take science in class 11? So by raise of their hands, I can judge that whether they are fit for science or are they fit for commerce. And then I tell them, if you take science, you have to take care of all these things. If you take commerce, it will be a casual branch. And if you take arts, that is a separate issue altogether. So in that way, I study their mind and then I teach them accordingly. Sir, moving a little back in time, what challenges did you face while transitioning from a corporate role to an educational one? In that corporate sector, more or less, it was an administrative job and management, administrative, whatever we call it. But when I took a U-turn towards the education sector, that was totally different. And I started remembering my old school days, how the teacher used to teach me biology and chemistry and physics, how the teachers used to write on the blackboard. It is still recurring in my mind. And I don't know how, I have a passion for teaching, writing on the board with the chalk and explaining the students. I feel it very comfortable myself. And it is if you can tell me to teach for 1 hour continuously also, I can take class for 1 hour continuously also. So that something is hidden in me where I can teach even the weak students also and upgrade them to the average level. Very good, very good, very great, sir. Great. Sir, moving to the next question and my favorite one, please share some memorable or impactful stories from your teaching career, sir. A few weeks back, I took the class 7 students to the science center at Raipur. And there were 22 students of them formed a group, and I took them to science center, and there physics and biology and chemistry were all displayed there in that center. It is run by the government. There were those sound bells, temperature, types of rocks, types of sand, all were in display. And that was a very thrilling experience to how inquisitively they were looking to the
artifacts and the display there with exhibits. And I explained them all the concept of rocks and sand and water, balls in pendulum in action, all these. This was a very thrilling for me in that way. And Moving. moreover, I took the biology students to a hospital which I am a trustee there, which is written in my resume also. There, luckily that day, a gallbladder operation was taking place, and the doctor inside was well known to me because I was a secretary of that institution. The students had, I showed them a gallbladder removed from the body in a tray. They could see. Great, They could see. great, sir. Sir, moving to the teaching and the complexity, how do you approach teaching complex subjects like science or accountancy or the technicalities into that? My focus is on before taking any chapter. My focus is on the basic concepts of that chapter. I Hmm. teach them the basic concepts, and then afterwards they can easily understand the chapter. For example, my in chemistry something is known as mnemonics. If you remember, how a difficult thing is remembered. There is some you develop something of that type. Suppose I have developed it myself. Abba se mithai mili hai. Abba se mithai mili hai means Abba becomes acid, Ba is base, Mithai is sugar, Abba se is salt, sugar is Mithai is sugar, Mili is mixture, Hai is hydrocarbon. So these are the six families of chemistry: acid, base, salt, sugar, mixture, hydrocarbon. So any substance, it has to be in these six families. In this way, I teach them, and all the six substances are available at our house, and they do not know it. So Right. I put them in that. I bring that samples also. I carry with them in the class, and I show them. Supposing a gelusil liquid, if you have seen, it contains magnesium hydroxide, and magnesium hydroxide is a base. And when a base, if you put some base in your mouth, it goes to your stomach, and if your stomach is suffering from some acidity, that base is neutralizing the acidity. Right. So in this Right. manner, I teach them. Great, sir. Sir, moving to the next question, what role does continuous learning play in both your professional and personal life? See, learning is a lifelong process. I tell the students that the more you write, the more you learn. And education is consists of three letters: RAW, reading and writing. Only reading will not do, and only writing also will not do. You have to read it and you have to write it. That in that manner, I tell the students that remember these two things: the more you write, the more you learn. And RAW, that is reading and writing. Great, sir. Sir, moving to the book, what motivate you to write book like Basic of Accountancy? It is a very interesting question. One of my relatives, he wrote a book and he got it published. Also, I heard about it. Then I don't know how it came from from my instinct or some from my inner conscience that why can't I develop a content of principles, fundamental principles of accounts, and Right. write it through. So I spoke to one of the publishers, and she told that you can write in Google Docs, Google Word file, where you don't have to save anything which you write. It gets imprinted in that, and corrections are also taken care of by that app itself. Then I went through that. Then I started. I don't know. Somehow I got that inspiration. It is 100%. It is self-inspired. Nobody inspired me to write a book. It was my self-inspiration, and I started writing. It took the whole content roughly took me 1 month to do. Then I sent it to her. She got it corrected, edited. She spoke to me several times, and finally that book was published. Sir, It was self-inspired. World Book Fair, which was held in Delhi recently, four or five of my books were in display with the in the stalls of the publishers, and I could not get the feedback anyway. But I am happy that my books were displayed in that World Book Fair. great. That is a good thing. Sir, moving to the next question and the important one, what advice do you give to inspiring educators
looking to make an impact? In one of my schools which I was teaching, Royal Public School Raipur, I had a very good opportunity to take a session of teachers. Hmm. Taking a session of teachers is far more different than taking a session of students. Hmm. So Right. teachers are also well educated and all. Then some 10 to 12 teachers were present in the session, and I told them how to approach to the basics of teaching and how you can move forward while you are teaching a chapter. So I showed them my demo also. And educators, I have told them that you have to be, if you can't be a mentor, but at least become half a mentor. If you can't be a full mentor, at least become half a mentor. Talk to the child what she wants to become. The moment you ask what you want to become, she gets inspired. If you ask anybody what you become in your life at a very early stage, 50% inspiration to वैसे मिल जाता है, because he or she feels great that somebody is asking me what will I become, then I should become also. That seed is already sown. It has to be sown there itself. Right, right, right. Taking the next question in the same context, what qualities do you believe are very essential for an effective teaching? See, effective teaching, so far as language is concerned, there are three things: writing, handwriting, spelling, and expression, sentence making. So far as spelling is concerned, I always advise the teachers to do difficult words in the chapter itself. You make them underline before you move to the chapter. You make them underline and you make them write the meanings of those words first before going to the chapter contents of the chapter. And then how do you teach the spelling part? I also teach the spelling that you judge the spelling by the pronunciation. Supposing transportation spelling for a class 7 student is quite difficult, but I can make it easy. Trans, Trans, transport, Eor, shun, Tion, transportation. All long words are most easy and short words are difficult, because a long word you can segment it in four parts, three parts, two parts, and just the spelling. Supposing you segment the long word, you might get wrong in putting E or I, but that will be a very minor mistake. The word will not go wrong, and maybe marks will not be deducted. But a small word makes you make give you a problem. The more the word is long, the more it is easy, because it is always segmented. Encouragement, N हो गया. Courage, there is a spelling. Ment, MENT, encouragement. In that way, I take my classes and I also advise my teachers to do. Recently, I was in Cuttack. I went to my school. We have a school of our own there in Cuttack. I gave a write up to the teacher, to a chemistry teacher, about this Abba se mithai mili hai, and I made 5 columns and I wrote the content of that. And niche mein I told her that there are some words which are similar, which look similar in chemistry, but they are different. Then about water, I told them there are 5 types of water: hard water, soft water, heavy water, distilled water. So at a glance, students को वहीं पे समझा देना चाहिए कि 5 प्रकार के वाटर है. आप आज सॉफ्ट वाटर, हेवी वाटर पढ़ा रहे हो, हार्ड वाटर पढ़ा रहे हो, फिर क्लास 10 में जाएगा, वहां पे वो हेवी वाटर पढ़ेगा. अभी आप पढ़ा रहे हो सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, हेवी वाटर अभी आज नहीं पढ़ा रहे हो. देन अब 2 साल बाद में वो हेवी वाटर पढ़ेगा. जब हेवी वाटर पढ़ेगा तो हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर को भूल जा रहा है. तो कम से कम एट ए ग्लांस चीजों को समझा देना. Supposing DE. DE is always something to remove, destroy, decompose, dehydrogenase, dehydration, deoxygenation. So wherever DE comes, that means something is broken. Something composition has broken. Something is broken. So that is the way of teaching. DE आप बता दीजिए मीनिंग, तो वो फटक से जब भी हायर स्टडीज में जाएगा तो DE जहां पे आएगा, he will recollect that the teacher had told me that D means something is broken, some composition has been disturbed. So that is the way I advise my teacher. Sir, moving to a very common question, please share your thoughts on the role of technology in education. See, there is a basic difference between science and technology. Science prevails in your lab, and when that lab comes out with a practical solution to a problem, whether it is technology or marketing or administration or management, anything, then if that idea is taken to the field and it becomes commercially viable, then
it is called a technology. So there is a difference between, there is a gap between science and technology. In my days, there was no mobile, there was no computer. We used to write notes. There was no guidebooks also, and there was no YouTube also, nothing of that sort. And the main focus was on the textbook and my notes. That was the procedure in those days of 80s I'm speaking, when I passed my school in 77 and college in 84. So there were no, these things were not there. And at that time, knowledge was also not so vast. तो जब knowledge vast नहीं था तो facilities भी नहीं. Now when today knowledge has become so vast and so rapidly changing, but that is coming with facilities also. You have internet, you have AI, you have chat GPT, you have your mobile, YouTube, Google, so many things are there. And साथ में knowledge भी there, knowledge भी बढ़ गया है बहुत. So things go, मतलब मूवमेंट इज ऑलवेज पैरेलल. जब नॉलेज नहीं था तो फैसिलिटीज भी उतनी नहीं थी. आज जब फैसिलिटीज है तो नॉलेज भी वैसे बढ़ा हुआ है. सो टेक्नोलॉजी से ही एजुकेशन बढ़ेगा और एजुकेशन से ही टेक्नोलॉजी बढ़ेगा. Great, very good, very great, sir. Great, sir. Sir, taking a personal question, please share your thoughts. How do you measure success in your role as an educator? See, as an educator, I have taken several personal coachings of students also in my house, but that was not in a very professional manner. I always advise the students, if you want to come with, if you want to take tuition, locally they say tuition. I don't call it tuition. If you come to me as for a tuition and all, I won't take classes to you. I won't give you classes regularly for the whole year. I will take hardly 1 month or 2 months and I will thoroughly teach you the basics. I won't go into any book. I won't go into any content. I would only tell you the basics. And from that basics, if you are able to do the chapters yourself, understand it along with the teaching of the school, then I consider myself as a successful teacher. Great, great, sir. Great, sir. Great. Sir, moving to the next question, what are some common misconceptions about teaching that you have encountered? Misconceptions means teaching अभी क्या हो रहा है sir? Parents have no time. Hmm. Teachers have their own family issues. Students have surrounded by distractions. Very true, very true. है ना? Parents, students, teachers, schools have become commercial. So teaching एक तरह से क्या हुआ? It is just like, मतलब टीचर्स को फैमिली इश्यूज ऐसा है कि जो लेडीज टीचर्स आ रहे हैं स्कूलों में आजकल, दे हस्बैंड इज अर्निंग एन इनकम सेपरेटली, टीचिंग इसलिए कर रहे हैं कि दे गेट ए सप्लीमेंट्री इनकम आउट ऑफ इट एंड सो दैट देयर लाइफ बिकम्स मोर कंफर्टेबल एंड द household की responsibilities भी they can shoulder it. They don't come as a serious teacher. They just want to complete their course and take the salary and go home. They don't become serious teachers. I don't say that you work for 10 hours, 12 hours, बट जितना देर स्कूल में रहते हो उतना उतना तो सीरियसनेस तो बच्चों के साथ दिखाओ. फीडबैक नहीं देते हैं, स्टूडेंट्स का फीडबैक मैनेजमेंट को नहीं देते हैं. एक कोई ऐसा कुछ सिस्टम भी नहीं है कि वो दैट स्टूडेंट 6 महीने पहले कैसे था और आज कैसे है, एक पिक्चर ऑफ बिफोर एंड आफ्टर, जैसे स्किन के डॉक्टर्स देते हैं, ये स्किन बिफोर ऐसा था, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन ये ऐसा हो गया. तो लेट द टीचर डू द सेम थिंग. ये बच्चा ट्रांसपोर्टेशन का स्पेलिंग 6 महीने पहले नहीं बता पा रहा था, नाउ व्हेनेवर आई एम आस्किंग हिम द स्पेलिंग, ही इज एबल टू स्पेल इट क्लियरली. तो ऐसा एक एक स्टूडेंट का स्टडी होना चाहिए कि पहले कैसे था 6 months पहले और आज कैसे है. दैट इज द वे ऑफ इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स पीरियडिकली. खाली एग्जाम टेस्ट लेने से नहीं होता है. Right, very true, very true, very true, sir. Sir, taking to the next part, what role do parents play in the educational success of their children? देखिए, there are 3 classes of parents. एक जो illiterate होते हैं and they do job in a private sector or government sector, whatever it may be, but they are illiterate. I have found many students of illiterate parents doing wonderful, and also many students of illiterate parents are zero. Right. They are not able to do anything in the improve their academics. अब स्कूल मैनेजमेंट क्या कर रहा है, उनको हर क्लास में पास करते करते वो आगे बढ़ा देते हैं. वो क्लास 10 तक कैसे पहुंचा, आई कांट नो. उसको जब मैं मैटर का स्पेलिंग आई टेल देम टू राइट, ही इज नॉट एबल टू राइट, MATTER, क्लास 10 में आ गया. हाउ डिड यू कम इन क्लास 10? तो स्कूल तो फेल कर ही नहीं सकते. दे आर नॉट एबल टू मेक एनी स्टूडेंट्स डिटेन्ड एनी ईयर. हमारे टाइम में एक दो तीन स्टूडेंट्स तो हर साल हर क्लास में डिटेन होते थे, बट दैट कंसेप्ट हैज ऑलरेडी गॉन. तो ये
कैसे होगा एजुकेशन इस तरह से? तो एजुकेशन अभी जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी किया, क्लास 5 एंड 8 का बोर्ड एग्जाम अभी अनाउंस किया है इस साल, उसमें पहले से बोल दिया कि नो स्टूडेंट्स आर टू बी फेल, पहले से अनाउंस कर। दिस इज द एजुकेशन पॉलिसी नाउ। एग्जाम लेना ही क्यों था जब आपको फेल ही नहीं करना था? मोर ओवर 100 मार्क्स में 20 मार्क्स को स्कूल के ऊपर छोड़ दिया, स्कूल वाले उसको 18 मार्क 19 मार्क तक दे दे। अब बचा कितना? उसको 100 में से 33 लाना है, 18 19 तो उसको मिल गया, और जो जितना बचा है 33 लाने के लिए, उतना तो उसको 80 में से मिल ही जाएगा, तो पास हो जाते हैं सब। अब फिर प्रॉब्लम कहाँ फेस करते हैं? कॉलेज। 12th तो पास कर लिए, चलो जैसे तैसे कर लिए, ये प्रॉब्लम कहाँ आता है? कॉलेज। जब वो स्कूल और कॉलेज की जो किताब है उसका गैप बहुत ज्यादा है, उसको गैप इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर उसको वो कोप नहीं कर पाते, तो सेमेस्टर सिस्टम में चले जाते हैं फिर वो। दिस इज द ट्रेंड नाउ। Moving to the third part, the students, how do you encourage creativity among the young students? देखिए, क्रिएटिविटी में आजकल इन द वीकेंड्स दे आर होल्डिंग ड्राइंग, पेंटिंग एंड मॉडल्स का भी बनाते हैं वो लोग क्लासेस। और क्रिएटिविटी तो आउटिंग से भी, टेकिंग देम टू पिकनिक्स एंड आल्सो दिस म्यूजियम्स एंड नर्सरीज। और ये आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स को तो मैं बोलता हूँ बैंक ले जाना चाहिए, कि उनको दिखाओ कि पेमेंट का हिंदी वर्ड क्या होगा वो नहीं मालूम, पर पेमेंट मालूम इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। पेमेंट का भुगतान है, दे डोंट नो इट। तो मैं तो एक लिस्ट बना के, मेरी जो कॉमर्स की अकाउंट्स की जो बुक है उसमें मेरी लिस्ट बनी हुई है अबाउट 100 वर्ड्स का, जो डेली कॉमर्शियल वर्ड्स हैं, और उसका हिंदी वर्जन वर्ड्स है उस बुक में। पहला चैप्टर में मैंने ये डाला हुआ है। Great, very दैट good. इज द, हाँ, दैट इज द लैकिंग इन दैट पार्ट। दूसरा क्रिएटिविटी है कि उनको एक चेक आप दे दो, तो चेक भरा हुआ चेक रहेगा, तो उसको डिपॉजिट फॉर्म में वो चेक को भरने का डिपॉजिट, दे आर नॉट एबल टू फिल दैट स्लिप जो बैंक में डिपॉजिट करना है। जिसके नाम से चेक है, मान लो मोहन दास के नाम से चेक है, दे आर राइटिंग देयर नेम, तो उनका नाम लिख रहे हैं। तो मैं तो चेक के सैंपल्स को फोटोकॉपी करके, डिपॉजिट स्लिप्स के फोटोकॉपी करके ले जाता हूँ, हर एक स्टूडेंट को देता हूँ कि ये चेक है और ये डिपॉजिट स्लिप है, मेरे को इसको भर के दिखाओ कैसे बनाना है। Right, right, very true. जैसे प्रैक्टिकलिटी से, प्रैक्टिकल्स जब तक नहीं लोगे, क्रिएटिविटी नहीं आएगी। Right, sir. चेक है तो उसमें ड्रॉवर कौन है, ड्रॉई कौन है, पेयर कौन है, पेई कौन है, उसके जो कंटेंट्स हैं चेक के, अगर दो क्रॉस साइन ऊपर कर दे तो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट, व्हाई इज इट कॉल्ड ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये सब बुक बताता नहीं है। दूसरे में अकाउंट में तो सब सैडेस्ट पार्ट इज कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स को टैली क्या होता है नहीं मालूम अकाउंट्स, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ही नहीं सिखा रहे, वो पुराना ढांचा बुक का अभी तक चल रहा है, एंड दैट इज मैनुअल अकाउंटिंग, वो अभी तक वो खत्म हो चुका है। तो मैनुअल अकाउंटिंग तो एकदम क्लोज हो चुका है आजकल, सब एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज, पर उनको एक्सपोजर ही नहीं है, करिकुलम में ऐड ही नहीं हुआ है वो। It's really a concern. दिस इज अनफॉर्चुनेट फॉर स्टूडेंट्स, इट इज टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। सर, इसी से कनेक्टेड नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगा, हाउ कैन एजुकेटर्स विद कंटेक्स्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट बेटर प्रिपेयर देयर स्टूडेंट फॉर द रियल वर्ल्ड? देखो, रियल वर्ल्ड में अगर जाओगे तो सबसे बेस्ट होता है स्टूडेंट्स को एनकरेज करना पड़ेगा टू रीड न्यूज़पेपर। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग है, घर में पेरेंट्स भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते तो बच्चे कहाँ से पढ़े? न्यूज़पेपर इज ए वेरी एसेंशियल टूल फॉर द स्टूडेंट्स, कोई भी किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट, डिसिप्लिन क्यों ना हो, अदर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अकाउंट्स हो, सोशल साइंस हो, स्टूडेंट से ही उसका जो है अपडेटेड नॉलेज वहीं से आएगा, वोकैबुलरी भी वहीं से इंप्रूव होगी, इंग्लिश का स्पीकिंग भी वहीं से इंप्रूव होगी, स्पेलिंग भी वहीं से इंप्रूव होगा। एंड इट इज जस्ट ए 5 रुपीज या 3 रुपीज का पेपर जो आता है, एंड दैट इज वर्थ थाउजेंड्स इफ यू गो टू इवेल्युएट दैट न्यूज़पेपर, इट गोज इन थाउजेंड्स। तो वो कोई नहीं एडवाइस ना तो स्कूल करेगा, ना टीचर्स करते हैं, और ना ही पेरेंट्स करते हैं। पेरेंट्स बस किताब स्कूल का पढ़ लो और पास हो जाओ, उनका वही एम रहता है। न्यूज़पेपर बहुत एसेंशियल करना पड़ेगा, it should be included in the curriculum, bring your newspaper, a page of the newspaper along with you daily, और उनको बोलो पढ़े, हो that will increase his debate also, इसका इंग्लिश स्पीकिंग है, उसका everything will improve from English, because in my career for the last, I'm now 63, I started reading newspapers for when I was 20 years old. From that, since last 43 years, I devote 1 hour to newspaper reading. अगर headline ठीक है तो I go to the contents, otherwise only headline. ये बहुत essential है for the students as on date, which I feel. Sir, moving to the next question and very important one, what are some effective ways to teach financial literacy
to young student? फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए इफ वी थिंक यू शुड गो फॉर इकोनॉमिक टाइम्स, दैट इज द फाइनेंशियल पेपर विच इज वेरी फेमस. अब तो आजकल ई पेपर भी मोबाइल में आ गया है, इकोनॉमिक टाइम्स. तो इन दैट आर करेंसी है, डॉलर है, शेयर मार्केट है, सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड्स हैं. तो दीज आर. सेकेंडली उसमें इनकम एक्सपेंडिचर है. फाइनेंशियल लिटरेसी तो वही बोल रहे हैं ना कि ही शुड हैव अ नॉलेज ऑफ फाइनेंस, जो कि क्लास 12 में फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं भी नहीं है सब्जेक्ट में, करिकुलम में. हाँ हाँ, और राइट राइट. हाँ, और फिर वो फाइनेंशियल लिटरेसी तो कॉलेज लेवल में भी नहीं आता है. कॉलेज लेवल में भी नहीं आता है. हाउ टू मैनेज योर ओन फाइनेंस. आई थिंक फाइनेंशियल लिटरेसी तो वही हो गया, हाउ टू मैनेज आवर फाइनेंस. तो कोई कोई नहीं पढ़ाता है. दैट इज वे. अभी क्या हो रहा है सर कि नॉलेज हैज बिकम अनलिमिटेड राइट. और टाइम टाइम हो गया लिमिटेड. ये बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख में. नॉलेज इज अनलिमिटेड, टाइम इज लिमिटेड. कैसे उसको मैनेज करके ही हैज टू डू इट. उसको अपना पर्सनल टाइम भी चाहिए, उसको अपना घर का काम करने का भी टाइम चाहिए, उसको अपने फ्रेंड से मिलने का भी टाइम चाहिए, उसको अपना मोबाइल का भी करने के लिए टाइम चाहिए, मोबाइल देखने के लिए भी टाइम चाहिए, उसके पार्टीज अटेंड करने के लिए भी टाइम चाहिए. कहाँ से आएगा इतना टाइम. तो ये बहुत बड़ा इशू है ना. Sir, taking the another question, and yes, it is also a concern. Please share your approach to career counseling for a student. Discussing career options with the students, it should start from class 7. I feel it should start from class 7. थोड़ा थोड़ा उसको, like just like putting ink drops in a bottle of water, तो थोड़ा थोड़ा सा start कर देना चाहिए कि करियर किस चीज में इंटरेस्ट है. टीचर इज द बेस्ट पर्सन टू जज कि वो स्टूडेंट किस लाइन में जा सकता है कंफर्टेबली. बिकॉज करियर चूज करने का 4 फैक्टर्स होते हैं. वन इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव in your hand. Secondly, what financial resources you can afford for the higher education. Third, are you prepared to leave your hometown if you are not residing in a metro? Many parents, they can't afford Right. to send their daughters outside. Fourth, your capability. ये 4 फैक्टर डिपेंड कर, मतलब दिस करियर काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन दिस 4 फैक्टर्स which the student can evaluate. मैं तो एक चार्ट बना के स्टूडेंट्स लोग को देता हूँ कि उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के क्या क्या ऑप्शंस हैं कोर्सेज का, एंड हाउ व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ दैट एज पीरियड ऑफ एजुकेशन. जैसे बीएससी है, इट टेक्स 4 इयर्स, बीटेक 4 इयर्स है, बीएससी 3 इयर्स है, बैचलर, बीटेक 4 इयर्स हो गया. उसके सिविल है, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, वेरी बिग लाइन, मतलब बहुत सारे कोर्सेज. तो मैं तो एक चार्ट बना करके सबको दिया हूँ. इवन आई हैव लैमिनेटेड दैट चार्ट. मैं लैमिनेट करके स्टूडेंट, बिकॉज एक कागज का टुकड़ा दोगे वो तो कहीं मुड़ जाएगा, तो खत्म हो जाएगा. लैमिनेट करके देता हूँ. गो सिट विथ योर पेरेंट्स, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स, यू टेक टाइम टू डिसाइड. तो क्लास 7 से करियर काउंसलिंग शुरू हो जाना चाहिए बाय द टीचर्स हिमसेल्फ. दे कैन डू इट बिकॉज दे आर द बेस्ट पर्सन टू जज. दे डेली इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स. एक एक टीचर को एक एक स्टूडेंट का सारी चीज मालूम होती है कि वो कैसे क्या करेगा क्या नहीं करेगा. Right, right. So talking to the third part and the most important, how students can handle the pressure of meeting education expectations. सर, इसके लिए आप सर कैसे उनको गाइड करते हैं, क्या है इसके बारे में सर प्लीज डिटेल में बताइए. मैं तो ऐसा ऐसा केसेस देखा हूँ, आई एम वेरी सरप्राइजिंग, कि उसको कॉमर्स पढ़ रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि 11 एंड 12 कॉमर्स करके यू टेक बीएससी इन कॉलेज. कौन बोलता है? हाँ, कौन बोल रहा है ना? मम्मी बोल रही है कि तुमको आगे चल के तुमको बीएससी करना है या फिर तुमको नीट का एग्जाम देना है. अरे हाउ इज इट पॉसिबल? 11 12 तुम कॉमर्स, फिर लिए क्यों तुम कॉमर्स? तो ये पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि वो खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हमको क्या उसको बनाना है, क्या उसको करना है, बिकॉज उनको भी उतना नॉलेज भी नहीं रहता है. अगर नॉलेज है तो फिर टाइम नहीं है उनको. दे नेवर इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स. आज ऑफिस से अगर पेरेंट घर आ रहा है, फादर आ रहा है, उसको तो बच्चे से तो बात ही नहीं करते. गैप हो जाता है, बच्चे अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं या फिर अपना टीवी देखते रहते हैं या फिर अपना मोबाइल देखते रहते हैं. और वो थके आ रहे आते हैं, वो अपना खाना खाते हैं, वो थोड़ा सा देर बतलाते हैं, फिर वो स्लीपिंग टाइम हो जाता है. तो पेरेंट्स और टीचर्स का इंटरेक्शन नहीं होता है, एंड दैट इज वो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है करियर में उसका. और टीचर्स आर द बेस्ट टू डिसाइड कि गाइड देम कि वो क्या ले सकती है, वो क्या ले सकता है,
एंड व्हाट प्रॉब्लम ही और शी माइट फेस, अगर ये लेना है तो इसको ये चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी। टीचर्स आर द बेस्ट, उनको राइट। नोटबुक्स वो देखते हैं, उनका वो हैंडराइटिंग देखते हैं, उनका वो राइटिंग का स्टाइल देखते हैं। अभी मैं एक डिक्शनरी बनवा रहा हूँ मेरे स्टूडेंट से फॉर हिंदी मीडियम स्टेट्स, इंग्लिश वेरी का डिक्शनरी मैं बनवा रहा हूँ। जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में 6,000 वर्ड है, मान लो 6,000 वर्ड्स को, उसमें 2,000 वर्ड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज हो पाते हैं। ओके। हाँ। हाँ, 2,000 वर्ड्स है, तो उसको मैं ईयर मार्क कर दिया हूँ। एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट्स को, जो मेरे टीम है, मेरी मेंटरिंग टीम जिसको मैं करता हूँ, उसको मैं दिया हूँ। एंड शी इज राइटिंग दैट वर्ड इन इंग्लिश, ब्रैकेट में उसका हिंदी ट्रांसलेशन लिख रही है एंड उसका मीनिंग लिख रही है, एंड अलॉन्ग विद दैट एक सेंटेंस भी उस वर्ड का हम उसमें डाल रहे हैं। वेरी गुड, तो वेरी गुड। उसको डाल रहे हैं एंड दैट डिक्शनरी विल बी पब्लिश्ड। इट विल टेक टाइम, 3 से 4 महीना 5 महीना लगेगा। I told her that don't worry about that time, but you do it nice. तो वो करीब करीब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो मोटा डिक्शनरी होता है उसका 30% वर्ड्स उसमें लेने का है हमारा टारगेट, वेरी गुड, वेरी जो कि गुड। डेली लाइफ में एंड मोस्टली स्पीकिंग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। डिक्शनरी का कल्चर ही खत्म हो, यस। तो हाँ, तो वो उसको ला करके फिर मैं अमेजोन में डालूंगा उसको, फिर उसका एक लोकल प्रिंटेड वर्जन लोकल प्रेस से मैं प्रिंट कराऊंगा एंड फॉर द लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको मैं यूज करूंगा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट सर, ग्रेट, ग्रेट सर। सर, इसी से कनेक्टेड एक और सवाल पूछना चाहूंगा। व्हाट रोल डू एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्ले इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट? देखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को हमने एक कॉलेज में एग्जीबिशन हो रहा था साइंस का, तो कॉलेज वाले बुलाए थे, तो करीब 15-16 स्टूडेंट्स को मैं कार में लेके गया था उस कॉलेज में एग्जीबिशन में। तो कॉमर्स के स्टूडेंट भले हो, बट दे शुड हैव सम नॉलेज ऑफ साइंस ऑल्सो, बिकॉज आई टेल द स्टूडेंट्स एवरी टाइम यू शुड नो एवरीथिंग ऑफ समथिंग राइट। एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग। कॉमर्स साइंस ले रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि बैंक का जो चेक बुक है यू आर नॉट एबल टू फिल इट। दैट डजंट मीन दैट मैं साइंस पढ़ा हूं तो ये मैं मेरी जान मतलब आई कांट डू इट, ये नहीं होना चाहिए। पहले क्या था, एक प्रोवर्ब था पहले, जैक का जैक ऑफ क्या था, हाँ हाँ, एंड समथिंग मास्टर। लाइक, हाँ। तो अब जो है एवरीथिंग ऑफ समथिंग एंड समथिंग ऑफ एवरीथिंग, वही उसी में आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर से ही आपका वो समथिंग ऑफ एवरीथिंग कवर होगा। एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे सबको ले गए साइंस एग्जीबिशन में, या सबको ले गए बैंक ले गए, इवन साइंस स्टूडेंट्स चलो बैंक चलो, रिसिप्ट क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, ड्राफ्ट क्या होता है। अभी अभी जस्ट सारे स्टूडेंट्स बैठे थे क्लास 11 में, और देवर साइंस स्टूडेंट्स ऑल्सो, बायोलॉजी स्टूडेंट्स ऑल्सो। हमको 20,000 रुपया दिल्ली में किसी को भेजना है। I want to remit 20,000 rupees to my friend at Delhi. How many ways are there which I can send 20,000? How many ways are there? चेक है, डिमांड ड्राफ्ट है, आरटीजीएस है, एनईएफटी है, पेटीएम है, फोन पे है, चलो ये तो डिजिटल हो गया, चेक भी है, तो कम कम से कम 6 और 7। तो वो देवर स्टन टू हियर दैट कि मैं बोर्ड में जब लिखा ऑल द 7 पार्ट की, तो ये दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा करिकुलर टीचिंग, दिस इज सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर टीचिंग जो बुक्स में नहीं है, जो बुक्स नहीं बताते इस चीज इन दिस वे। जैसे शेयर्स है, अब शेयर्स है तो वो जिंदगी में कभी शेयर्स को देखे ही नहीं, तो मेरे पास जो शेयर्स रहते हैं उसकी फोटोकॉपी करके फिर मैं ले जाता हूँ, देखो ये 100 शेयर्स का सर्टिफिकेट है, उसका फेस वैल्यू इतना है, आज उसका मार्केट वैल्यू मोबाइल में चेक कर लो, उसका मार्केट वैल्यू क्या है, शेयर देखे नहीं है। फॉरेन करेंसी है तो कभी डॉलर देखे नहीं है। तो ये सब चीजें स्कूल को ही इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि उनको एटलीस्ट समथिंग ऑफ एवरीथिंग, सब चीज थोड़ा सा उनको जानकारी मिलना चाहिए सब चीजों का, समथिंग ऑफ एवरीथिंग उसको वही बोलते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा करिकुलर। We also came to know that you are also pursuing a PhD. Sir, please tell us in detail about that. पीएचडी, मेरी बहुत इच्छा थी पीएचडी लेने की साल भर पहले भी ऑल्सो, बट somehow I couldn't proceed. Suddenly one fine morning I was looking to my Facebook page and I एक sponsored ad था कलिंगा यूनिवर्सिटी का for admission in PhD. So I immediately I talked to them over phone and they told me that you come over here and have a discussion. I took my testimonials also and all, and luckily they need 55% average mark, aggregate mark in master in commerce. Luckily I got 55.6% something in that 1984 batch of Revenisha College Cuttack. So I got, they told me that an entrance test will be conducted and a short interview will be there.
I passed both the sessions of entrance exam and interview, personal interview, and they gave me admission in PhD. Nowadays, I'm pursuing that also. I have to go to the college on Saturdays and Sundays, and rest days are working days for school. I go to school, so that is they have two courses, full time and part time. So any person who is working in somewhere, he can take part time, and those persons who are not working, they can take full time. I think full time courses they will be able to complete as a target of 3 years, and part time they give 4 years to complete. So I have taken the admission, and we are a batch of some 40 students with us, and luckily or not luckily or fortunately, I am the eldest of that. Great, 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 sir. Great, So sir. मेरे एज के सामने कोई नहीं है. आई एम 63 and all are below below 60 in that. Right, right. Great, 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 sir. Sir, moving to the most important part, students. What resources do you recommend for students looking to enhance their learning? एनहेंस द लर्निंग आज की तारीख में एवरीथिंग इज एट योर फिंगर टिप. आपके पास लैपटॉप है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास गूगल आंटी है, आपके पास में यूट्यूब है, अंकल है. इतना मैं तो अभी ये 3 से 4 साल में इंस्टेड ऑफ रीडिंग बुक्स, खासकर आई शुड सेंड माई ग्रेटिट्यूड टू गूगल एंड यूट्यूब की उनसे मेरे को इतना नॉलेज मिला है, आई कांट इमेजिन. आज भी मैं गूगल से ही रिसर्च का टॉपिक्स को लेकर के एक पेज डेली लिखता हूँ in my diary and I carry it along with me wherever I go. अभी भी मैं बाहर हूँ रायपुर से, that diary is in my bag. तो वो उससे क्या होगा कि आपका एक्स्ट्रा नॉलेज जो गेन होगा ना, वो आपको जो करिकुलम का जो पार्ट है, दैट विल आल्सो हेल्प इन दैट करिकुलम पार्ट ऑफ दैट हेल्प्स इन करिकुलम पार्ट ऑफ. ये सब सुविधाएं पहले, फैसिलिटीज पहले नहीं था. आज जब फैसिलिटीज है, स्टूडेंट्स आर नॉट यूजिंग. Right, right. क्या करो. Sir, moving to next question, and yes, it is the important one for this podcast too. What are some life skills you believe should be taught in our school? देखिए, लाइफ स्किल में सबसे पहला होता है स्पीकिंग स्किल. जैसे यू शुड बी एबल टू टॉक नाइसली, कॉन्फिडेंटली, Right. knowledgeably. That is the most basic skill the student should have. Abhi, I was supposed to take some oral interviews of students for having 10 marks, to give 10 marks to them, class 10, 12. I was asking them question, how far is your house from this school? So they were not able to tell. It is कम से कम उतना तो बोलना चाहिए कि इट इज वेरी नियर टू द स्कूल और इट इज अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई स्कूल. ये सब तो पढ़ाया नहीं गया ना. पढ़ाया क्या नहीं गया, वो पढ़ते ही नहीं है. खाली बुक्स, जो स्कूल की जो टेक्स्ट बुक्स है, उससे ये सब स्किल्स डेवलप कभी नहीं हो. तो ये एक तो होता है स्पीकिंग स्किल, और एक होता है राइटिंग स्किल, और एक होता है बॉडी स्किल जिसको बोलते हैं हाउ टू सिट, हाउ टू वॉक, हाउ टू हैंडशेक, हाउ टू सिट इन अ चेयर इन योर डाइनिंग टेबल. तो ये तीसरा पार्ट है. राइटिंग स्किल एंड स्पीकिंग स्किल, ये 3 स्किल अगर वो डेवलप कर लिए तो बेसिक चीजें इसमें कवर हो जाए. Sir, getting into the end of the podcast, sir, please share the memorable moments, feedbacks from students, from colleagues, from parents that you have received. फीडबैक पे आई गॉट मेनी ऑफ माई द बुक्स विच आर ऑन माई अमेजोन लिस्टेड. तो उससे सम 5 of the students I have guided my students to write books, and they have written physics at a glance, chemistry at a glance, and biology at a glance, and metals and pharmacy. All these books are listed in Amazon today, and they have been written by my students. I have not put my name on the cover also. Just back में जो introduction जो about the author रहता है, I have just added a line that this I was inspired by Mr. BP Agarwal to write this. So मेरे को in my authorship, Thank God was a very good book written by me. Just for today was also a very, and moreover this what do you say, the principles of accountancy of class 11. Right. I had published this book through Blue Rose Publishers of New Delhi, and I have started receiving royalties on this book. And one single day I got email that 7 copies were sold in one single day, and I'm receiving mails from Blue Rose Publisher that my copies are being sold. And one of my Hindi book, Dhanyavad Ishwar, that is a spiritual book, I'm receiving phone calls from my colleagues and from my friends कि मैं इनके यहाँ गेस्ट आया हूँ, and I saw this book, I saw your mobile number, I just
thought of telling you that it is a very nicely written and all. So this is the feedback I'm receiving now. Great, sir. Very good, very good. You have transformed many lives. You have helped many people, many students. I have Right. I have That is inspired one student to write a book on maths, that is tips and tricks of mathematics of class 10, up to great. class 10. So she is on that job now. She is on Great, that job. great. Sir, moving to the end of the podcast and the last question, what will be your last message for Yogi Ram listeners and the people who are viewing this podcast and the people who have been and honored by your guidance and you have transformed their lives? See, this interview is basically for those parents who their offspring, their children are in school stage and also in college also. My message is that in order to educate your children in a very befitting manner, you have to give him or her a what do you say, quality time. You have to spend some quality time with with your son or daughter, and talk to them what they want, what is their problems, and what they want to become in future. Just talk to them. Even your talking will inspire them. See, 1 hour of teaching of parent is equal to 1,000 hours of teaching of a टीचर. ओनली 1 hour of teaching by a parent. इतना फर्क पड़ेगा उस स्टूडेंट में, parent can't imagine. That is my message to the parent. Great, sir. Sir, it was really my pleasure. It was really a pleasure of Yogi Ram team to have you on the podcast. And personally, मेरे को बहुत अच्छा लगा how you taught, how you discuss the basic things and the technicality, जब मैं बोलूँ complexity बोलूँ in a very simple manner. And Simple most manner. important, जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या चीजें being a teacher, being an educator, being a parent and being a student अपने को देखनी चाहिए, संभालनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए, so that can help a individual to grow. And yes, the most important कि कैसे सारी चीजों को क्लब करके how we can achieve the results. So sir, बहुत Yeah. बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके and really thank you very much for your precious time and discussing about these topics and your life journey, sir. Thank you.